मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी इंटर पेपर नंबर 2 लॉ का फेमा एक्ट। और इसके पर क्वेश्चन को मैं लगभग तीन तीन बार रिपीट करूंगा, ठीक है, 3 बार और 4 बार लगभग, ठीक है। एक्सप्लेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच एल्टर एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ प्राई और एसेट एंड लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ प्राई। दो बार रिपीट करता हूँ। एक्सप्लेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच एल्टर एसेट एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ प्राई और एसेट एंड लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ प्राई। दो बार रिपीट करता हूँ। एक्सप्लेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर एसेट एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ फ्राई और एसेट एंड लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ फ्राई। रिपीट करता हूँ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर एसेट एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ फ्राई और एल्टर एसेट एंड लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ फ्राई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर एसेट एंड लाइबिलिटी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. Current account transaction means a transaction other than capital account transaction. Current account transaction. Current account transaction means a transaction other than capital account transaction. Current account transaction. Current account transaction means a transaction other than capital account transaction. Payment in due in connection with foreign trade. Payment due in connection with foreign trade. Payment due in connection with foreign trade. Payment due as in short-term banking credit facility, short-term banking credit facility in ordinary course of business. Payment due as interest or loan and as net income from investment. Payment due as interest or loan and net income from investment. Payment due as interest or loan and net income from investment. Remittance for living expenses of parent, spouse, children. Expenses in connection with foreign trade, travel, education, medical care of parents, spouse and children. दोबारा रिपीट करता हूँ. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन. Current account transaction means a transaction which other than capital account transaction. Current account transaction means a transaction other than capital account transaction. Current account transaction means a transaction other than capital account transaction. Current account transaction means a transaction other than capital account transaction. Payment due in connection with foreign trade. Payment due in connection with foreign trade. Short-term banking credit facility in ordinary course of business. Payment due in connection with foreign trade. Short-term banking and credit facility in ordinary course of business. Payment due as interest or loan. Payment due as interest or loan and net income from investment. Payment due as interest or loan. Payment due as interest or loan and net income from investment. Remittance for living expenses parent. Remittance for living expenses of parents, spouse, children residing abroad, and expenses with connection with foreign trade, education, medical care of parents, spouse, children. Export means any goods taking out of India to a place outside India. Services one from India to a person outside India. Export means any goods. Export mean any goods taking out of India to a place outside India. Services from India to any person outside India. Services from India to any person outside India. Import means bringing into India. Import means bringing into India. Import means bringing into India any goods and services. Foreign security means any security in form of share, stock, bond, debt, and any other investment. Explain person resident in India. A person resident in India, individual residing in India for more than 182 days in previous financial year, but not include person gone out of India and stay outside India. In other case, employment, business or vocation,
any other purpose which indicate has intention to stay outside India for a certain period. Or B, a person come to India or stay in India otherwise than employment in India, business vocation in India, any other purpose which indicate has intention to stay in India for a certain period. ठीक है. Body corporate of India, any branch, office, agency owned and controlled outside India by prime person resident in India. Any branch, office, agency owned in control in India by PROI, PROI. ठीक है. Explain capital account transaction. Hold own or may transfer or invest in foreign currency. दोबारा रिपीट करता हूँ. Explain capital account transaction. Prime may hold any transfer or invest in foreign currency, foreign security or any immovable property situated outside India. Person resident outside India may hold, own, transfer and or invest in India currency, security or immovable property situated in India. ठीक है. Person resident outside India. Person resident outside India means a person who is not resident in India. Person resident outside India means a person who is not resident in India. ठीक है. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो प्रोहिबिटेड, फिर सीजी मतलब सीजी की अप्रूवल चाहिए, फिर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए. ठीक है. सबसे पहले तो प्रोहिबिटेड, रेमिटेंस आउट ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग एंड राइडिंग, पेमेंट रिलेटिंग टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, रेमिटेंस फॉर पर्पज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल. ठीक है. रेमिटेंस आउट ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स, इनकी प्रोहिबिटेड है. ट्रांजैक्शन परमिसिबल विद अप्रूवल ऑफ सीजी. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन ट्रेड, कल्चरल टूल, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट. ठीक है. ट्रांजैक्शन परमिसिबल विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई. इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग पर्पज विद इन द लिमिट USD 250 only. Private visit of any country, gift or donation, going abroad for employment, travel or business, study abroad, expense in connection with medical treatment. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. सबसे तो प्रोहिबिटेड ट्रांसफर, रेमिटेंस आउट ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग एंड राइडिंग, रेमिटेंस आउट ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड प्रिस्क्राइब्ड फुटबॉल बॉल्स. पेमेंट रिलेटिंग टू कॉल बैक सर्विसेज, ट्रांजेक्शन परमिसिबल विद अप्रूवल ऑफ सीजी, एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, कल्चरल टूल, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट. ठीक है. और ट्रांजैक्शन परमिशन विद आरबीआई अप्रूवल. इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पज, लिमिट ऑफ $250 ओनली. प्राइवेट विजिट एनी कंट्री, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्टडीज अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवल फॉर बिजनेस. ठीक है.
capital account transaction, a list of permissible class of transaction made by person resident in India. Investment by any person resident in India, investment in foreign securities, transfer of immovable property outside India, import and export, loans and overdraft by person resident in India. A list of permissible class of transaction may be person resident outside India. Investment in India. Issue of security by board. Acquisition and transfer of immovable property, import export, or investment in Indian securities. Prohibited capital account transaction. No PROI shall invest in India in the business of chit fund and Nidhi company, agriculture, plantation activities, real estate business. Complete.